So my dear friends, the wait is finally over and we are Hello everyone, warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session. So today we will be covering the finance current affairs for 23rd as well as 24th of September, and I'm pretty sure you're going to enjoy the discussion. If you're still thinking that whether these days are important for my upcoming RBI Grade B examination or not, then I would like to highlight this, that yes, August and September, these are the most, or I would say these 2 months are the crucial month for your exam preparation, because majority questions as per the previous year trend are going to be asked from these areas only. So before we start with the discussion, may I have a reply in the comment section that yes, I'm audible, visible, everything is fine, so that we can begin the discussion without any further delay. One more thing guys, if you haven't shared the link of this session, quickly share it with your friends so that more and more students, they can join us live and they can get to know that yes, this is a one-stop solution for preparing for the current affairs, especially related to the finance, where we are discussing the majority questions related to RBI updates as well as the other regulatory bodies updates and even the banking and other financial institutes updates as well. ठीक है जी, स्टार्ट करें. आई होप वी आर गुड टू गो. ठीक है. सो 18th एंड 19th की पीडीएफ अपलोडेड नहीं है. इज इट ट्रू गाइज? ऐसा हुआ है क्या? आई हैव डन दैट मिस्टेक. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे हुई हो, लेकिन अगर मिस हुई है तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट आई कैन मार्क इट डाउन एंड आई कैन note it down with me so that I can upload it just after this session itself. Please let me know 18th और 19th की जो बेसिकली पीडीएफ है, क्या वो अपलोडेड नहीं है? एक बार बता देना प्लीज. चल ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आफ्टर दिस क्लास उसे चेक भी कर लूंगा एंड देन आई विल अपलोड इट, डोंट वरी. तो आज का जो हमारा सेशन है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के सेशन में 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो बन सकते हैं फॉर योर फाइनेंस एग्जामिनेशन, दैट विल बी डिस्कस्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट फॉर श्योर. तो जो आपके 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में बनने के पूरे चांसेस है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड वी विल बी डिस्कसिंग मेनी मोर अपडेट्स फ्रॉम आरबीआई इटसेल्फ. ठीक है, ओके. आफ्टर दिस सेशन आई विल अपलोड द 18th 19th जो भी है, आई विल चेक इट आउट, डोंट वरी. नाउ लीव इट ऑन मी, आई विल चेक इट आउट एंड आई विल अपडेट द रिमेनिंग, बट डोंट वरी, आई एम सॉरी फॉर द डिले. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो, let's get started. If you want to download the PDF of this particular session, that will be available on my Telegram channel. You can join this Telegram channel by clicking on by scanning the code, the QR code which is available, or even you can search me by my handle, that is @Madhav Arora. ठीक है जी. चलो, सो सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, प्लस बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, बट यू विल बी रिवाइजिंग टुडे विद मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. हियर वी गो विद द फर्स्ट न्यूज. जो हमारी पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, एंड द सेकेंड पॉइंट इज नॉन डिलीवरेबल रुपी डेरिवेटिव मार्केट. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट दिस मार्केट ओनली, कि ये मार्केट क्या है, क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, व्हाई दिस न्यूज इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्ड डेरिवेटिव? हम सब जानते हैं सर, डेरिवेटिव का मतलब है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच टेक्स अप इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट. अगर मैं कहूं यहां पर हमारा जो अंडरलाइंग असेट है अगर इक्विटी शेयर है, सो वी विल से दैट अंडरलाइंग असेट is equity share and the value of the contract is taken from the equity share itself. So यह जो हमारे पास टर्म है that is non-deliverable rupee derivative market. सबसे पहली बात, ये non-deliverable का मतलब क्या? Non-deliverable का मतलब ये है कि you are signing a contract, but on the completion of the contract you won't be exchanging
the financial instruments. ऐसा नहीं है कि let's say we decided and we signed a contract, Infosys के equity share, and I said as per the contract that I will be purchasing your Infosys shares at 2000 rupees on 30th of October regardless of the market price. तो जब 30 अक्टूबर होगा on the date of completion of this contract, I won't be purchasing those shares to you, rather we will be making a cash settlement. अगर 2000 से ज्यादा वैल्यू है Infosys के शेयर की, you will be paying me. If it is less than 2000, I will be paying you. Will settle down the trade difference in the form of cash और cash settlement होगा. तो नॉन डिलीवरेबल की अगर हम बात करें तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड इज एन ऑफशोर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूज किया जाता है टू हेज या स्पेकुलेट करेंसी, जैसे कि इस केस में इंडियन रुपी है, विच इज नॉट फुली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट. सो सेटलमेंट इज डन फ्रीली. सेटलमेंट जो है दैट विल बी डन इन अ फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, यूजुअली यूएस डॉलर्स, नॉट इन आईएनआर. बट यहां पर कोई एक्चुअल डिलीवरी ऑफ आईएनआर नहीं होगा. Only the net cash settlement is done, and that net cash settlement will be done obviously in the deliverables currency, in the acceptable currency, that is US dollar or something like that. Non-deliverable rupee derivative की अगर मैं कहूँ, so since the Indian rupee it is partially converted or partially convertible, especially in case of capital account, so many foreign investors or traders, they cannot freely trade INR offshore. So hence what they use is they use offshore non-deliverable forward market to basically hedge their INR exposure. For example, rupee NDF contract in Singapore, Dubai, London, Hong Kong, they are basically doing it. They are basically doing it to hedge their losses. I'll take an example. Suppose a company expect that $1 US is going to be 84 rupees in 3 months, and they enter into a non-deliverable forward contract at 84.5. If the actual $1 is equals to 85 rupees, then the company will gain 50 paisa on every dollar. And if the value is below 84.5, then the company will be paying the difference. So अगर value बढ़ जाती है तो in that particular case company will be earning the difference as a profit. So that is basically you need to understand in this particular discussion. तो यहाँ पे ये जो market है, अब इस market में what they have done is, in this particular market they have allowed the standalone प्राइमरी डीलर्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट. ठीक है, अब इस पूरी न्यूज को पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा. आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय. लेकिन एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में गिव येस और नो दैट वेदर द टर्म नॉन डिलीवरेबल इज क्लियर, नॉन डिलीवरेबल रुपी डेरिवेटिव इज क्लियर. अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्लियर है, जस्ट गिव मी यस सर. So recently it has been decided that the stand-alone property dealer, stand-alone primary dealer, authorized as authorized dealer category 3 shall also be eligible to transact in the non-deliverable derivative contract involving the rupee. अब इस पॉइंट को आगे पढ़ने से पहले ना हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या कि सर ये आखिरकार ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये क्या है. तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई according to FEMA, Foreign Exchange Management Act, is the regulator of the foreign exchange market in the country, and all the foreign exchanges or all those entities which are providing you with the facility of foreign exchange, foreign transfer, foreign remittance, they get the license, they get the approval from RBI only. So in that particular case, RBI categorized them into 4 different categories: authorized dealer 1, 2, 3, and we have full-fledged currency exchanger. So these are the 4 categories. I'm not getting deep into it, but this authorization is done by RBI. Now first, let's try to understand what is stand-alone primary dealer, and then I'll come back to the news. So stand-alone primary dealers, they are basically the specialized financial institutions. Please pay attention. Specialized financial institutions that primarily deal in government securities and play a very important role in the development of debt market in India. तो याद रखना, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स क्या है सर? दीज आर द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जिनको बनाया गया विद द सोल मोटिव दैट दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन द
day-to-day transactions, and these day-to-day transactions will be related to the government securities, and they are trying the level best to develop the debt market in the country. So when they are authorized as authorized dealer category 3 under the Foreign Exchange Act 1999, that means they get certain additional permissions related to foreign exchange transactions. तो इसका मतलब अगर एक stand alone primary dealer है and it is registered or it has authorized under authorized dealer category 3, that means सिर्फ और सिर्फ they are not allowed to trade in the primary, they are not only allowed to trade in the government securities, but they are allowed with certain permissions related to the foreign exchange transactions as well. Let's make this point clear. So the core role standalone primary dealer are the institutions which are designed by RBI to underwrite and trade in government securities only. Their main function is to include bidding in the primary auctions of government security, acting as market maker in the secondary market to provide liquidity. तो एक तरफ जब RBI government securities issue करेगा, they will be the buyers, and when they have purchased in the secondary market, they will be buyers as well as purchasers. So basically they are makers of the government security market in the country. Now what is this authorized dealer category 3? Under the FEMA, as I said, Reserve Bank authorizes different categories of dealers. So one is authorized dealer category 1, which is the category given to the commercial banks, which are allowed to handle all the current account and capital account transactions. अब जिसको समझ ना आ रहा हो current account, capital account transactions, क्या सर ये current account, saving account? नहीं, ये वो transactions है which we are making on the which India is making with rest of the country. For example, remittances, import, export, profit, salary flow, gift, grant, they all are the current account transaction, and capital account transaction involve only two types. One is investment and the other one is borrowing. So that is category 1. So category 2 is limited scope. They handle specific remittances only. Category 3 is granted to the institutions like standalone primary dealers for specified foreign exchange transactions. When standalone primary dealers, they are authorized as authorized dealer category 3, they are allowed to deal in certain foreign exchange products. Recently, they have been allowed by RBI to participate in the non-deliverable derivative contracts involving rupee. What is the significance? ऐसा क्यों किया? So significance of this permission is basically to expand standalone primary dealers' role beyond government securities into the currency derivative market. ऐसा क्यों? Sir, in order to allow them to serve both residents as well as non-resident, increasing the market depth. अब ये जो standalone primary dealers है, so they will be serving the residents as well as the non-residents who want to bet on Indian rupees with respect to their market exchange rates. It will enhance India's financial market infrastructure, obviously by broadening participation in the rupee-linked derivatives, and it will help managing the risk and provide more hedging avenues for the investors. ठीक है, अब वापस चलते हैं न्यूज जहां से शुरू हुई थी. तो न्यूज क्या कहती है कि सर आरबीआई ने रिसेंटली स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जो कि कैटेगराइज्ड authorized dealer category 3 के अंडर रजिस्टर्ड है, they are now allowed to participate in the non-deliverable rupee derivative market as well. So Reserve Bank of India, थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें, रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस थ्रू फेमा. Master Direction on Risk Management and Interbank Dealing was introduced in 2016. These regulations, they aim to ensure smooth, safe, compliant operations in the derivative market, especially in the contract involving Indian rupees. तो इस रेगुलेशन में दे हैव नॉट अलाउड द स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स. तो आज की जो करंट सिनेरियो है, व्हाट इट सेज दैट ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, दैट इज बैंक्स ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट, IBU. So all those banks which are operating in the international financial service center banking unit were permitted to transact in non-deliverable derivative contracts involving rupee. So these non-deliverable derivative contracts allow market participants to hedge or take position in rupee without actually physically holding them and without witnessing the physical delivery of INR. Rather, the settlement will be done in the international currency only. So now RBI has said कि भैया हम इसकी expansion कर रहे हैं, where we are coming up with standalone primary dealers. Authorized dealer category 3 will also be allowed in the same market.
कहानी समझ आई? अगर पूरी कहानी समझ आ गई तो जस्ट गिव मी यस सर, सो दैट वी कैन कंक्लूड द डिस्कशन. तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या इफेक्ट होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, they have done this under the RBI Act 1934 as well as FEMA 1999. easy. अगर मैं सीधा इतनी न्यूज देके चला जाता ना, काम तो इतने से स्लाइड में भी चल जाता. ऑनेस्टली इतने काम चल जाता. अगर फेज 1 में अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप आंसर कर पाते. बट अगर यही क्वेश्चन फेज 2 में इन द फॉर्म ऑफ आई वुड से पैराग्राफ फॉर्मेट में आ जाता, जहां पे एक पैराग्राफ देकर आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू माइट हैव लॉस्ट इट. सो इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स category 3 better, as well as to understand the non-deliverable rupee derivative market instruments better, I have taken this explanation. If it is clear, give me thumbs up. Let's try to solve a question on the same. Which of the following statement about the standalone primary dealers and their participation in non-deliverable rupee derivative contracts is correct? First option, specialized standalone I would say standalone primary dealers, they are authorized as authorized dealer category 3, can now participate in the non-deliverable rupee derivative contract with residents as well as non-residents. Correct. Only authorized dealer category 1 banking operating in IFC were allowed to transact in this. Earlier only they were allowed. Yes sir, earlier only they were allowed, but now it has been expanded, and this expansion has included the standalone primary dealers as well. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहां पे एक पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आज की डेट में अगर आप देखें तो सिनारियो चेंज हो चुका है. यहां पे इन्होंने क्या लिखा, ओनली आर अलाउड, या तो वॉज अलाउड करते, ओनली के साथ मान लेते. अब इन्होंने ओनली भी लगा दिया और आर भी लगा दिया, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. सो बी स्टेटमेंट गलत हो गई. लॉजिक समझ आया? ठीक है. Standalone primary dealers need to convert to authorized dealer category 1 to trade in NDDC. That is not. आप अगर category 3 में भी enrolled और registered है, you are allowed. SPDs can only transact NDDC with domestic banks, not overseas bank. गलत सर, ये किसी के साथ भी कर सकते हैं ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Participation of SPD in NDDC is optional and require RBI prior approval. सर कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हमने परमिट कर दिया, जाओ और एंजॉय करो. मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन आंसर बनता है, दैट इज ए ऑप्शन. मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन आंसर बनता है, दैट इज ए ऑप्शन. मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है. अगर अभी भी किसी को डाउट हो कि नहीं सर मल्टीपल स्टेटमेंट आंसर्स होने चाहिए, आपके क्वेश्चन में तो हमेशा मल्टीपल स्टेटमेंट्स ही आंसर होते हैं, तो यहां आज थोड़ा सा आप गलत होंगे. ठीक है जी, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत बोलो. डन हो गया? किसी को लग रहा हो कि नहीं सर कोई और ऑप्शन करेक्ट है, तो आप प्लीज डिबेट कर सकते हैं इस पे. डन? चल बढ़िया. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है 2 एस्पेक्ट्स में. पहली बात तो ये, एक सेकेंड, लेट मी चेक आउट द डेट. आई हैव नोटेड डाउन दैट डेट. मैं आपको मेंशन कर देता हूँ वो डेट, एक सेकेंड दीजिएगा. हाँ जी, जून मंथ में जो हमारा फाइनेंस करंट अफेयर का सेशन था, गो एंड चेक 19th to 21st जून 2025 का जो सेशन था, मोस्ट प्रोबेबली 22nd ऑफ जून को हुआ होगा. उस सेशन में भी आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर न्यूज. देन यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर अगर दोबारा क्यों करा रहे हो. दोबारा नहीं करा रहा, दिस हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन नाउ इट हैज बीन रिवाइज. तो पिछला जो हमने कवर किया था, दैट वाज नथिंग बट इट वाज सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स फॉर शेड्यूल्ड बैंक्स फॉर मार्च 2025. टुडे आई हैव द डेटा फॉर जून 2025. थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी सुना देता हूं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड Supervisory Data Quality Index that measures data quality in terms of accuracy, timeliness, completeness and consistency in the submission of returns. Reserve Bank of India Directions 2024 were introduced, which is applicable on all the banks, all the commercial banks except
RRBs, all primary cooperative banks, all Indian financial institutes, all non-banking financial companies, excluding housing finance companies and all the asset reconstruction companies. अब मेथड क्या, हम क्या कर रहे हैं सर, हम ये चेक कर रहे हैं डेटा क्वालिटी, जो बैंक्स डेटा शेयर करते हैं विद आरबीआई, उस डेटा की क्वालिटी कैसे है. सो उस क्वालिटी को चेक करने के लिए वी हैव 4 पैरामीटर्स. वन इज एक्यूरेसी, सेकेंड इज कंप्लीटनेस, थर्ड इज टाइमलीनेस एंड फोर्थ इज कंसिस्टेंसी. पहला पॉइंट एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट डेटा आप शेयर कर रहे हैं विद आरबीआई. दूसरा पॉइंट है कि आपका डेटा कंप्लीट है या नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, कि आपका डेटा कंप्लीट है या नहीं, दैट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज टाइमलीनेस, क्या आप टाइम से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं विदाउट एनी डिले. एंड कंसिस्टेंसी, दैट द डायमेंशन विच चेक्स फॉर द कंसिस्टेंट एक्यूरेसी ऑफ द डेटा फॉर प्रीवियस क्वार्टर्स, कि पिछले क्वार्टर्स को अगर हम देखें तो आपने कितना कंसिस्टेंट डेटा दिए. ठीक, अब उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है. टाइमलीनेस में जो मेजर एरियाज रिव्यू किए जाते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, आपका डेटा कब डिले हुआ है इन ईयर, डेज ऑफ डिले इन ईच सबमिशन, नंबर ऑफ रिविजन्स कितने करने पड़े आपको डेटा सबमिट करने से पहले, फिर सबमिशन ऑफ ऑल द रिटर्न्स और मैंडेटरी फील्ड्स क्या आपने फुल की है या नहीं, दैट इज कंप्लीटनेस. अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, विद इन करंट पीरियड एंड विद पास्ट पीरियड डेटा, विद इन रिटर्न एंड बिटवीन रिटर्न्स वैलिडेशन, other data sources, and finally consistency, that is average of accuracy score of past period will help us to understand the consistency. अब यहाँ पर जो score है that will be given out of 100. Good score is above 90, acceptable is 80 to 90, need improvement is 70 to 80, and if you are below 70 then it is a major concern. तो है क्या, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है. जो आपके scheduled commercial banks है, they share data. Now RBI has come up with a new index to measure the quality of that shared index. इस क्वालिटी को मेजर करके आरबीआई को क्या फायदा सर, आरबीआई को ये फायदा है कि जो आरबीआई पॉलिसीज बना रहा है, दोज पॉलिसीज आर ऑब्वियसली डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एंड डेटा इज शेयर्ड बाय द बैंक्स. अब अगर ये डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, इफ दिस डेटा इज नॉट appropriate, then how can we say that the policies which are created or which are implemented by RBI, they are in right direction? No. How can we expect that the RBI initiatives will lead to the development of the economy? No. So first of all, we need to check that whether our benchmark on the basis of which we are creating policies, regulations, amendments, is it up to mark? Firstly, if it is up to mark, then obviously we can rest assured कि हाँ जो हम policies बना रहे हैं that will have a good impact in the near future. अब आते हैं मार्च 2025 तक का डेटा हमने पढ़ा था. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा फॉर अप्रैल, मई एंड जून, यानी जून 25 तक का डेटा. सो ये जो सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स है फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इट कवर्स 87 scheduled commercial banks with and their key returns like return on asset liability, off balance sheet exposure, return on asset quality, return on operating results, risk-based supervision, liquidity returns, return on capital adequacy, central repository of information on large credits and whatnot. तो जो आपका supervisory data quality index है, it covers the 87 scheduled commercial banks and their returns. जो data they are sharing, the data on return on asset liability and off balance sheet exposure, return on asset quality, return on operating results. So ये सारे data को check किया जा रहा है and we are analyzing that how well this data is, how accurate this data is, how acceptable this data is. तो इसमें आपको याद क्या करना है, ध्यान से देखो. ओवरऑल जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी है, इट हैज इंप्रूव्ड. लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 इट वाज 89.3, दिस टाइम इट इज 89.9. इंप्रूवमेंट है, थोड़ी सही लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी के सभी पैरामीटर्स पर वी आर विटनेसिंग द इंप्रूवमेंट. None of the parameter has dropped down in comparison to the previous result, so that is important. तो मैं आपको टिक कर देता हूं इसमें से कौन कौन सा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद इस पूरी स्लाइड में से आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कोई और डेटा याद करो, बट अगर याद करना है तो आप एक डेटा याद कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्लीटनेस, दैट इज 100 आउट ऑफ 100. पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्लीटनेस, दैट इज 100 आउट ऑफ 100, विच इज गुड कॉल, विच इज गुड कि भैया जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दे आर शेयरिंग द कंप्लीट डेटा
They are sharing their complete data with the supervisory authorities, with the data utilization authorities, which is good. अब इसमें मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया वो पार्ट जो आपको याद करना है. इसमें आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा, 89.9 याद कर लेना, और इसके साथ साथ जो आपका स्कोर था मार्च का, जो आपका मार्च 2025 का स्कोर था वो याद कर लीजिएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर मार्च स्कोर वाज 89.3. तो जो आपका स्कोर था दैट वाज 89.3. I'll just write it for you over here so that you can have this. So this is for March 2025. This is 89.3. It has improved to 89.9, which is important to remember. Next, top performing category is small finance bank. Second is private banks. Third, we have public sector banks. And fourth is foreign banks. Score is 90.7, 90, 90 and 89.7. इसमें से स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस फ्लो इज इंपॉर्टेंट. बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन प्राइवेट बैंक्स, देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड देन वी हैव फॉरेन बैंक्स. टेक्निकली देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्राइवेट बैंक्स ही तो है, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट होल्डिंग एनी ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये भी प्राइवेट बैंक्स ही है, बट दीज आर स्पेशलाइज्ड कैटेगरी बैंक्स बिकॉज दे आर अलाउड ओनली टू प्रोवाइड, they are asked to provide at least 50% of the 50% of the total number of loans of value 25 lakhs each. तो उस वजह से ये स्पेशल कैटेगरी बन गया. ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया 1 2 3 4. रीड करोगे तो भी चलेगा, बट दिस डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस डेटा वेरी इंपॉर्टेंट. और आई वुड से दिस कैटेगरी, which category or which bank has performed 100 out of 100 in that public sector bank, what is the parameter? Completeness. बस इतना, that's it. क्लियर हो गया. उसके अलावा कुछ दो चार इंफॉर्मेशन और है, वो मैं शेयर कर देता हूँ. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरऑल सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स फॉर ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अप टू द क्वार्टर एंड June 2025. In June 2025, no entity has scored below 80. In 2025, no entity has scored below 80. No entity has scored below 80. उसमें आपको याद रखना होगा सम ऑफ दी पॉइंट्स की किसी को भी 80 से कम का स्कोर नहीं दिया. अगर किसी को भी 80 से कम का स्कोर दिया नहीं तो मेजर कंसर्न या नीड इंप्रूवमेंट में कोई है ही नहीं, या तो सारे एक्सेप्टेबल है या फिर गुड. दैट मीन्स वी आर गोइंग गुड इन टर्म्स ऑफ दी सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है जी, क्लियर हो गया. क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. विद रेफरेंस टू दी सुपरवाइज, अगर किसी को इस पर्टिकुलर टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना, गो एंड चेक माई 22 June 2025 फाइनेंस करंट अफेयर सेशन विच विल बी फॉर 19 to 21 of June. ऐसा लिखा होगा थंबनेल पे, तो आप उस सेशन को ओपन कीजिए. ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन आई हैव डिस्कस्ड this particular news or this particular concept in much detail. So I won't be taking much time over here. Let's try to solve the questions. The Supervisory Data Quality Index measures the quality of data submission of the scheduled commercial banks in terms of accuracy, timeliness, competitiveness, consistency. That is true. It was introduced in line with the principle of master direction of filing of supervisory returns. That is true. Supervisory Data Quality Index covers 87 scheduled commercial banks and key supervisory returns. That is true. In June 2025, the overall score declined in comparison to March. No sir, it has improved. 89.3 से improve होकर कितना हुआ है sir? Now it is 89.8. Score less than 70 are acceptable. No sir. Score less than 70 is not acceptable. Rather, it is major concern. 70 to 80 is need improvement. 80 above is acceptable, and इस बार सारे banks they were 80 above, so answer is going to be A option because first, second and third statement are correct, but rest of the statements are wrong. ठीक है जी, is it clear? Is this point clear? Give me yes sir. Okay. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. अब यहां से बनेगा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा उस पर बात करते हैं. सबसे पहले सर, एज यू ऑल नो, इंडिया इज एन इकोनॉमी और इंडिया इज अ कंट्री विच इज रनिंग बिहाइंड एआई, है ना. वर्ल्ड में एआई का क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया एक ऐसी नेशन है वेयर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फोमो कि भैया एआई नहीं आता,
AI के साथ इंटीग्रेटेड नहीं हो तो जॉब जाएगी, many things. But on the other side, if we see the other side of the coin, AI has helped a lot in improving almost all the sectors of the economy and especially the banking, or I would say the fintech sector. The fintech sector क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, बैंकिंग, फिनटेक, और आई वुड यूज अ वर्ड फाइनेंशियल सेक्टर, where where analysis is very important, where decision making is very important, and if you are making a decision on the basis of the data and you are reviewing the data thoroughly, that has a great future, and that is what has been witnessed. तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं RBI can come up with a question related to the role of AI in the banking sector, importance of AI in the banking sector, how AI is changing the landscape of banking sector. In तीनों formats में RBI can ask a question. So keeping that question in my mind, I have come up with this particular news. Actually ये news नहीं है, actually it's not a news, it is basically a keynote address. आप समझो कि एक speech है by your Deputy Governor M. Rajeshwar Rao, and he has delivered this speech on 16th of September at the third edition of CNBC TV 18 Banking Transformation Summit. तो उस Banking Transformation Summit हुई मुंबई में. There he come up banking transformation, नाम से क्लियर हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो उसी पे सबमिट थी और वहां पर की नोट दिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने, एंड ही टॉक्ड अ लॉट अबाउट द एआई's रोल इन द इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, current, past, as well as the future. So I will be compiling the entire thing in one answer so that you have all the information related to AI. अगर AI और बैंकिंग सेक्टर, AI और फाइनेंशियल सेक्टर को लिंक करके अगर कोई क्वेश्चन आया, then you can use this content for sure. Ready? Are you guys ready? Give me yes sir so that I can move ahead. And if you haven't hit the like button, quickly hit the like button so that we can move on and we can discuss this particular news. Quickly guys. अवेक, जाग रहे हो ना भाई? ठीक है, अब सुनना ध्यान से. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अब मैंने क्या किया, उनकी स्पीच को मैंने इस तरह से फ्रेम करके दिया आपको कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द रोल ऑफ AI in transformation of banking ecosystem, in transformation of banking ecosystem. अब किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बहुत गलत है. हाँ, किसी को ये लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ही जेनरिक क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन फाइनेंस में ना पूछा तो दे कैन इवन आस्क इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. और वैसे भी फाइनेंस इज जनरल फाइनेंस एज पर आरबीआई, तो उसकी वजह से क्वेश्चन बन सकता है. तो मैं पूरा फ्लो आपको बना रहा हूं, पूरा आर्टिकुलेट करना मेरे साथ, सो दैट इफ यू हैव टू राइट आंसर यू कैन राइट इट. सो आई वुड स्टार्ट इन दिस मैनर. The journey of technological evolution. So Indian banking sector has historically shown adaptability to the new technology. So this is very good to start your introduction कि भैया इंडिया में इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छे से अपने आप को अडेप्ट किया है विद दी न्यू टेक्नोलॉजीज. 1980s में कंप्यूटराइजेशन हुआ बैंकिंग सेक्टर में. देन इन 1990s वी introduce ATMs, then in 2000 we introduce internet and mobile banking, and 2010 onwards is explosion of evolutions. So if I talk about these explosion of evolutions, it include interoperable digital payment infrastructure, data repository, as well as the shared platforms. अब अगर हम आज की डेट में बात करें, the current phase is defined as digital democratization. How we are talking about digital democratization? So basically digital democracy का मतलब है access, where we are looking forward to remove the difference or digital divide between urban and rural. And not only this, government has set the target to become a developed nation by 2047, and every adult should not just have a bank account, but also access to affordable credit, insurance and investment products by 2047. And the focus is on
समावेशी विकसित भारत, दैट इज इंक्लूसिव डेवलप्ड इंडिया। तो इतनी इंफॉर्मेशन इज प्रीटी गुड टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट आता है कि सर अगर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक है आपका फर्स्ट वन इज योर loan and the other one is the deposit. So if I talk about the progress in the credit access and RBI's initiative to do that, so credit growth trend की अगर मैं बात करूं from 2019-20 to 2024-25, average annual credit growth was 10.5%, which is showing that yes, our banking sector is performing well. So पहले ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने बात की है उसमें एआई के रोल पे तो बात करूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी डेटा दे दिया कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए what is the role of or discuss the impact of information and technology or AI on the banking sector, then you can start with this progress in the credit access. So average annual credit growth rate is 10.5%, rural credit share is 33%, MSME credit share is 18%, and RBI has taken n number of measures to expand the credit access. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आरबीआई ने ऐसे कौन से मेथड्स परफॉर्म किए हैं so that RBI can increase the credit access. So if I talk about the progress in credit access, then in that particular case, first one is reducing friction and increasing transparency. So Aadhaar based KYC, central KYC registry, अब KYC easy हो गया. Revised priority sector norms, digital lending guidelines, account aggregator framework. These are the initiatives taken by RBI with the motive of reducing friction and increasing transparency. Next is RBI has come up with enabling MSME financing, where RBI has launched trade receivable e-discounting system, co-lending models, targeted refinance schemes. Then RBI has come up with tech-driven initiatives where RBI, that is the RBI's fifth wholly owned subsidiary, that is Reserve Bank Innovation Hub, has launched or developed unified lending interface. याद है मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी unified lending interface की कि पद्मा जी है, she is a dairy farmer, she approached to the bank to borrow a loan. बैंक ने कहा पहले कभी लोन लिया, उन्होंने कहा नहीं, बैंक ने उनसे 50 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए. अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि she should gather those documents, and then bank is also not very sure कि ये जो documents है उनसे bank can take a good decision or not. So the better is ULI. So what is ULI? This is a platform where all the different platforms have been linked, information centers have been linked, and the access is given to the bank. तो जैसे ही customer का आधार नंबर, पैन नंबर डाला जाएगा, access can be achieved, and from that access bank can take a good decision even for the newcomers or even for the first comers to borrow the loan. So that is unified lending interface, which integrates eKYC data, property records, GST N data, satellite data, AA framework, CGT MSC framework, and whatnot. Development ये जो हुई है, it is basically aiming to faster, aim is faster, cheaper and broader credit delivery, especially to the unorganized segment of the society. ठीक, तो ये है आपके रूल्स. तो पहली चीज क्या, पहला चीज था हमारा इंट्रोडक्शन कि कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर. फिर उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ऑन बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ आरबीआई इन दिस. अब उन्होंने बात की चैलेंजेस. सो डिस्पाइट ऑफ दिस प्रोग्रेस देयर आर चैलेंजेस बिकॉज only 25% of the India's adult population has formal access to credit. MSME sector, contributing 30% of the India's GDP, continues to rely significantly on informal sources. RBI financial inclusion data has improved to 67, which reflects improvement in account ownership, access, but usage and quality has remained uneven, which is a very important point, which is a point of concern. The task is not just to lend more, but to lend better. ये समझना होगा, आज के फिनटेक को समझना होगा, आज के प्राइवेट स्टार्टअप्स या मैं कहूँ आज के प्राइवेट इन्वेस्टर्स या स्टार्टअप्स को समझना होगा कि इट्स नॉट अबाउट एक्सपैंडिंग द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री, इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग better loan to the public, directing
क्रेडिट टू हायर मल्टीप्लायर सेक्टर्स। मल्टीप्लायर सेक्टर्स मतलब जिसको पैसा दो वो पैसे से पैसा तो बनाए। आप पैसा मुझे दे रहे हो, मैं जाकर आईफोन 17 खरीद ला रहा हूं, उससे क्या फायदा हो रहा है? अगर यही आपने पैसा उतना एक एमएसएमई को दिया होता तो एमएसएमई उससे प्रोडक्शन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ एमएसएमई का एक्सपेंशन होगा एंड यू विल गेट एन एक्सेस टू द फॉर्मल सेक्टर or formal credit sector, which is very important. So keeping that in mind, MSME, infrastructure, rural as well as informal economy, these are the target areas. अब पॉइंट आया सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमने इस पूरे न्यूज को, इस पूरे आर्टिकल को समझा था, वो क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू वेव इन द बैंकिंग सेक्टर. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई on the banking sector, or what is the role of AI in transforming the banking sector? तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Now I'm giving you the complete answer for this question. अगर आपसे कोई पूछे how credit growth has evolved over the period of time due to technology, what was the role of RBI in credit growth of the banking sector, you can discuss these points. यहाँ पे जो मैंने pointers दिए, you can elaborate them in order to complete your or in order to achieve close or reach close to your word limit. ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे. AI. So AI adoption is moving beyond operational efficiency to decision making and customer engagement. मतलब कि सर शुरुआत यही हुई थी कि let's implement AI in most of the industries with the motive of increasing the operational efficiency. कि भैया the task which can be performed by machinery, machine or analytical understanding of the machine, that should be done by the machine only, and we should get our operational efficiency by reducing the count of employees or in that direction. But ये शुरुआत जो operational efficiency से हुई, now it is taking role on decision making as well as customer engagement. So AI is not only giving you operational efficiency, it is now providing you the decision making capabilities, customer engagement and whatnot. Remember that 70% of banking, financial services and insurance organizations in India now have enterprise level AI strategies. और ये डेटा मैंने कहां से निकाला है सर? ये डेटा मैंने निकाला है NASSCOM का AI एडॉप्शन इंडेक्स 2024. अब बैंक्स AI को इतना ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं सर? फॉर risk and fraud management, for IT operations optimization, credit scoring and claim processing, customer engagement, that is chatbot greater than in 75% बैंक. आज की डेट में 75% बैंक से ज्यादा बैंक्स के पास, मतलब 3/4 of the total banks, they have their chatbot so that they can engage the customer in a better manner. Now, what are the use cases of AI across the credit cycles? So first one is credit inclusion, कि भैया AI का क्या रोल है for providing the credit. तो उसमें पहला है credit inclusion, use of alternative data, जैसे कि UPI transactions है, subsidy receipts है, utility bills है. For example, I am a bank, ठीक, and I have applied AI on my transactions. So all the transactions which are done by my customer, all the subsidies which are received by my customers, all the utility bills paid by my customer from my bank account, AI will analyze those accounts, and then after analyzing, AI can identify the credit invisibles. Credit invisibles का मतलब क्या? कि सर ऐसे अकाउंट्स, ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना, those who can be banks next potential customers. So that has been done by the banks. And not only this, credit invisibles are individuals who do not have a credit history with formal financial institutions. They have no record in the credit bureaus, but their bills, their subsidy receipts, their UPI transactions can help AI to understand कि क्या भैया ये बंदा अगर कल को लोन लेगा तो हमारा पैसा वापस कर देगा या नहीं. तो ये फायदा होगा. तो एक तो आपने पोटेंशियल कस्टमर ढूंढ लिए, प्लस जो कस्टमर अगर आपके पास आता और आपको प्रॉब्लम हो जाती तो उसका सॉल्यूशन मिल गया कि भैया इन सारी ट्रांजैक्शन से, इन सारे डेटा से एनालिसिस कर लो who is capable of borrowing and returning as per their
as per their transactions. इसका एग्जाम्पल है गवर्नमेंट्स ग्रामीण क्रेडिट स्कोर 2025 which was in news. I'll discuss in some time. अगला पॉइंट है टर्न अराउंड टाइम. अगला जो बेनिफिट हुआ क्रेडिट का, क्रेडिट लाइफ साइकिल में एआई का, दैट इज टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम का मतलब आप आए बैंक के पास एज एन इंडिविजुअल, you presented your application requirement of loan, then bank asks you to submit the documents, you have submitted the documents. Now if these documents are reviewed manually, it's going to take time, but if these documents are reviewed through a machine, it will be done pretty easily. So bank को आपको आंसर देना easy हो गया, whether we will be providing you loan or whether we won't be providing you the loan. So that turnaround time, we call it as STAT, faster loan approvals using AI on GST filings, e-invoices, ट्रेड्स डेटा. तो भैया जो आपका जीएसटी फाइलिंग है, ई इनवॉइसेस है, ट्रेड्स डेटा है, उससे बैंक कैन टेक अ गुड डिसीजन. सिमिलरली क्रेडिट अप्रेजल्स इन ऑर्डर टू एनालाइज द कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर टू बोरो, that can be done easily with the help of AI, which we call it as behavioral analytics, improved risk assessment. Then we have customized credit solutions. Customized credit solution का मतलब the moment you reach to the bank and you raise your request, you come up with your conditions, with your requirements. On the basis of your condition, your requirement, bank can have right away solution from AI कि भैया इस बंदे को आप ऐसा करो, these two products should be merged on these conditions so that you can give him a tailored product which can be acceptable by him, which can be receivable by him, which will be approved by him. So this analysis will be done in a very better manner with the help of machines rather than individuals. So tailor lending products aligning with the borrower's capacity. Early warning system, dynamic monitoring of borrower stress, dynamic monitoring of borrower stress. Borrower stress का मतलब कि भैया इस बार installment was delayed by 2 days, next time 7 days, next time 15 days. So that means there is something wrong going on. So you can identify the probability, in a real time that who or which account holder may default the loan in the near future depending upon their data, depending upon their past repayment data. Then we have document management, AI powered OCR. Have you heard this OCR? It's very common term. I don't know whether you have heard about it or not. OCR अगर आपको याद हो तो we used to use this when we were in college. OCR का मतलब है when you scan a document, let's say you are scanning a book. The moment you scan a book, you get an image, है ना? वो scanned जो copy है, that is an image on your PC. But imagine if you are scanning a content, if you're scanning a data, if you're scanning a word data, and that word data will reflect into your into your computers in the form of word file only, which you can edit. That is optical character recognizer. So detection, AI powered optical character recognition for KYC and document verification. Detection of forgery or tampering can also be done by AI. Next is customer support, multilingual AI chat box, loan servicing, AI driven repayment solution, collection strategy. Last is fraud and cyber security, real time detection, mitigating AI powered frauds like deep fakes or synthetic identities can be easily identified with the help of AI. ठीक है जी, तो ये है benefit of AI, especially for the credit life cycle or especially for the credit facility which is provided by the bank. Clear हो गया? Credit inclusion, turnaround time, credit appraisal, customized credit solutions, early warning system, document management. 7th is customer support, 8th is loan servicing, and 9th is your fraud and cyber security. Done. अब सर AI जितने ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ आया है उतने ही अपने साथ रिस्क भी लेकर आया, उतने ही अपने साथ एथिकल इश्यूज भी लेकर आया. सो लेट डिस्कस दोज आल्सो. AI risk and ethical imperatives. फर्स्ट इज थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, वेंडर या क्लाउड प्रोवाइडर. अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक ने अपना AI खुद डेवलप कर भी लिया तो डेटा स्टोरेज, डेटा मैनेजमेंट, डेटा रीडिंग, तो उसमें थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इनिशिएट हो गई. मार्केट कोरिलेशन विच मीन्स बिहेवियर वाया सिमिलर मॉडल्स. अब अगर SBI ने कहा कि इस बंदे को लोन नहीं देना चाहिए, PNB भी कहेगा मत दो, क्योंकि दोनों का
जो डिसीजन है दैट इज डन बाय एआई, और दोनों में जो थॉट प्रोसेस है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो हो सकता है कि अगर एक मशीन एक जगह गलत कर रही है तो हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट हर एक जगह गलत कर रहा हो, विच में रिजल्ट इन, आज तो हो सकता है 1 or 2 or maybe 10 or 20% of borrowers they may not be able to borrow, but in near future कोई ऐसा glitch आ जाए, कोई ऐसा issue आ जाए जिससे most of the customers are rejected due to this AI decision making, that will be tough. Next is cyber security threats, model risk, data risk, legal risk, concentration risk. Concentration risk means few dominant AI cloud providers, बहुत कम AI प्रोवाइडर्स है, क्लाउड प्रोवाइडर्स है। तो भैया कल को ऐसा ना हो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का पूरा डेटा कुछ AI लिमिटेड प्रोवाइडर्स के पास है, देन they can hijack the entire Indian banking system as well. Who knows, that can happen. Then we have generative AI misuse like deepfakes, frauds, disinformation, that can be done. अब इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नेंस एंड मिटिगेशन. So governance and mitigation to counter these risks says strong AI governance framework should be set up in the country. Human in loop principle, which means AI should support but humans should decide. This is very important. This is very important, especially in the financial sector. Financial sector में जो decisions हैं that should be taken by humans, but support can be taken from AI. Expandable AI, which means loan decisions must be auditable and transparent. That means your AI decision should be explainable. Data quality and privacy protection, it should be compliant with the given act. Research and development, which means algorithm for fairness and bias removal, should be taken into consideration. Research and development, algo for fairness and bias removal, as discussed. Industry collaboration, which means harmonized taxonomies, best practices should be implemented over the industry. तो ये कुछ governance या mitigation steps है which you need to take in order to counter these risks which have been discussed. तो AI in banking sector का impact क्या है, benefits, issues, challenges, and what could be the solution. Complete package has been given to you. Now along with this, sir, what are the regulatory initiatives taken against this AI issue? So draft model risk management guidelines 2025. So to be expanded beyond credit to all AI driven models. So governance, validation, monitoring, explainability, it will be expanded beyond credit to all the AI driven models. Agla hai free AI committee report which says 7 guiding sutras for responsible AI in finance, emphasized on trustworthiness, transparency, proportionality, resilience, and whatnot. So AI in banking is not a simple upgrade, but it's a paradigm shift, which means balancing innovation with prudence is very important. So bank must adopt optimistic vigilance, which means embrace AI for inclusion, efficiency, and growth, simultaneously build resilience, governance, explainability, and fairness. So this is going to be your conclusion. And even you can use a quote, trust is the currency of banking. So as AI broadens credit access, maintaining trust is both the biggest responsibility and challenge for the bank. So this can be a complete answer, especially अगर AI और credit पूछा जाए तो this is a perfect answer. अगर AI और bank भी पूछा जाए, still you can easily write 400 to 450 words from the given information. उसके अलावा you can expand on deposit facilities and other AI powered services which are provided to their customers by the banks. मजा आया? क्लियर हुआ? मजा आया? क्लियर हुआ? इतने डेप्थ में ना आपने कभी पढ़ा होगा ना कोई पढ़ाएगा. अगर उनका आपने आर्टिकल पढ़ लिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. जग सुना सुना लगेगा आर्टिकल पढ़ने के बाद. He has used all technical terms, so I break it down, maintaining the decorum of the article by using those technical terms, but placing them in such a manner that you can digest them, you can understand them. Done? ठीक. इसके अलावा जितनी भी रिपोर्ट्स से ये डेटा लिया गया, all the reports, जैसे कि ये एक्ट मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल free AI report was mentioned, for example financial inclusion index was mentioned, for example NASSCOM AI adoption index was mentioned.
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर 2025 was mentioned. Don't worry, इसका डेटा मैंने आपको दे दिया है. Go through with it. ये करंट अफेयर्स के 6 रेफरेंसेस है which has been taken into this particular article. So I have given you the data for those articles as well. जनधन योजना का रेफरेंस था, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का रेफरेंस था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट was referred, NASSCOM AI adoption index was referred, and financial inclusion along with free AI report was mentioned. I will be taking one separate session on this. I'm sorry I was not able to do that, but I'll do it soon. Maybe a video or a live session, but still a basic I have given you, but I will be taking a detailed session as well. Don't worry, which is important. ठीक है जी, डन हो गया, क्लियर हो गया. सो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आएगा तो लिख के ले लो, इन्हीं 3 पॉइंट से आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा. रिमेंबर दैट. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट एनीवन? Any doubt till this point, anyone? Just let me know in the comment section, please. मजा आया? Give me a thumbs up. चलो, question solve करें. Here is the question. Consider the following statement regarding the recent financial inclusion initiatives in India 2025. Now you must be wondering why you are asking this question, because all the news or current affair references which has been discussed, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it was covered by Manisha. Then Grameen credit score was covered by me only. Financial inclusion index was covered by me only. तो उसी पे मैंने क्वेश्चन बना दिया. As of August 2025, प्रधानमंत्री जन धन योजना accounts crossed 56.17 crore with over 66% in the rural and semi-urban areas. Is this point correct? Give me the answer. Is this point correct? Yes or no? Yes sir, approximately 67% ही है. 66, 67 दोनों जगह जो भी लिखा हो सही मान लेंगे. More than half of the प्रधानमंत्री जन धन योजना account holders are women. That is true. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर initiative leverages collateral based lending to promote rural credit access. नहीं सर, collateral based थोड़ी ना, it is for non collateral based. Or I would say it is an initiative government taken to use alternate or non-traditional data such as UPI transactions, subsidy receipt, utility payments to assess credit worthiness for the underserved population who lack formal credit history. The idea enables credit invisibles to access formal credit. So Grameen is basically AI based, and it also underscores a shift in mindset, lending not purely based on collateral or conventional credit history, but also on the basis of data. So on that particular basis, दोबारा से read करते हैं. Leverages collateral based lending only? नहीं sir, it do not leverages collateral based lending, rather it leverages data based lending. So that is the reason third statement is wrong. RBI Financial Inclusion Index 67, that is true. Then since its introduction in 2021, Financial Inclusion Index has increased about 24%. That is correct. That is correct. बात चेक कर लेना, मेरे हिसाब से डेटा सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So that is correct. चलो बढ़िया. So आंसर क्या बनेगा? 1, 2, 4 and 5. B option is correct. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली न्यूज की ओर. The next question is on the same news. The same topic talks about the first one, public tech platform for frictionless credit in an RBI innovation hub initiative to enable seamless digital data flow for lenders. So public tech platform for frictionless credit in an RBI innovation hub initiative, that is true. This is an initiative taken by RBI to expand credit access. ULI integrates financial as well as your non-financial data sets such as digitized land records, GSTN, data and satellite information. That is correct. Digital lending guidelines were primarily introduced to promote higher credit growth without any regulatory oversight. No sir, this is wrong. ऐसा थोड़ी ना हुआ. Trade receivables e-discounting system facilitates MSME through account aggregator framework, enables individuals to share their financial data securely with lenders for
better credit assessment. That is true. So answer इसका भी B option बनेगा 1, 2, 4, 5. Third option is incorrect. ठीक है जी. Moving on, I guess, to the last news of the evening. The last news talks about the recent. Last we talked about 32nd FSDC subcommittee meeting, and today we have 35th conference of state finance secretaries. So what is it? Reserve Bank of India's 35th conference of state finance secretary was conducted on 18th September 2025 in Mumbai. Very important. What was the theme? Journey towards economic prosperity through the path of fiscal consolidation. If I talk about the conference of the state finance secretaries is a regular institutional platform. पहली बार नहीं हुआ, regular है, जिसमें RBI engage करता है with states and union territories on financial as well as fiscal issues. Participants include Secretary of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Finance Secretaries of 28 states and 2 union territories, Delhi as well as Puducherry. J&K तो अब UT बन गया. Senior officials from Ministry of Finance, Controller General of Accounts and Comptroller and Auditor General of India, they are also present. RBI Governor inaugurated the conference and delivered the keynote address. क्या highlights थे RBI Governor के keynote के, वो highlights मैं आपको बताता हूँ. First one, fiscal discipline and growth link. He emphasized that fiscal prudence is the foundation of sustainable economic growth. States were urged to avoid excessive deficit and adopt sound borrowing practices. कि भैया जो आपके ऊपर ये deficit है उसे कम करो, because अगर हम बात करते हैं debt, total debt, not central government, total debt to India's GDP, it is greater than 80% or it is around 80%, which is high. Quality of expenditure. So states should prioritize productive and developing expenditure. That means पैसा लगाओ infrastructure पे, health पे, education पे, rather than making unproductive revenue expenditure on subsidies and all. Off budget borrowings, stress the importance of transparency in borrowing. कि जो आप off budget borrowing कर रहे हैं, that should be transparent. You should take in account these hidden liabilities through guarantee or off balance sheet mechanism that could result in issues with the fiscal stability. Then cooperation with RBI called for strong coordination between states and RBI, currency management, financial inclusion and ULI. क्योंकि भैया ULI platform पे बहुत सारा data access is taken or will be provided from the state government. तो उसके लिए उनका tie-up होना अच्छा है और better tie-up होना जरूरी है. Then we have agenda items which are reviewed. So they have reviewed cash management of the states, need for efficient management of state government cash balances, better alignment of revenue inflows, expenditure outflows as well as borrowing to avoid unnecessary cost. अगला पॉइंट है मार्केट बोरोइंग्स कि भैया आप कितना बोरो कर रहे हैं थ्रू मार्केट, दैट वी कॉल एज स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स. देन फिस्कल कंसोलिडेशन, प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट्स in adhering to fiscal responsibility and budget management targets, very important. Then ये आपको याद हो FRBM Act was introduced in 2013, 2003 फिर नहीं हो पाया पूरा, फिर इसे एक्सटेंड किया गया. रिसेंटली कोविड के बाद एक रिपोर्ट आई, एक्सटेंशन हुई और उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट किए गए और वही बात की जा रही है दैट यू शुड मूव इन द डायरेक्शन सो दैट you can achieve the financial responsibility and budget management data or targets, especially fiscal deficit, debt level, as well as एक और important point था under this, that is revenue expenditure or a revenue deficit. These were the targets. Significance of the conference, तो sir obviously macro fiscal coordination है, RBI coordinating with SBI, तो macro or fiscal coordination है, where center, state, RBI coordination will obviously benefit the overall flow of the economy. Policy alignment होगा, RBI जो बना रहा है क्या state वैसा सोच रहा है, state जो सोच रहा है कि RBI वैसा बना रहा है या नहीं. Transparency and sustainability and support for reforms which have been taken by RBI for the public benefit. So in short मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35th conference underscored the India's economic prosperity depends not just on growth but also on the fiscal discipline. Very important point. State plays a very important role and RBI seek to act
act as a partner facilitator ensuring fiscal consolidation and financial inclusion so that we can go hand in hand. Got it? Clear है? समझ आ गया? तो अगर अगली बार यहाँ पे एक क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ RBI in state government fiscal management. So in that particular case, you can utilize this answer, you can utilize this data to write an answer for this particular question. मजा आया? बताओ जरा, उनकी रिपोर्ट है, उनका एक बार स्पीच जाके पढ़ना, समझ नहीं आएगा बोल क्या रहे, लेकिन मैंने उसको इस तरह से ब्रेक किया so that it should be fruitful for you, so that you can use it while writing a good descriptive answer. Done guys? Enjoyed? I hope you have already liked the session. If not yet, do hit the like button. Let's try to solve a objective question. Consider the following statement. Okay, the theme is journey towards economic prosperity through the path of fiscal consolidation. Is this theme correct? Yes sir, absolutely correct. Governor of RBI inaugurated the conference to only finance secretaries of 10 largest states. ना ना सर, सबको बुलाया था, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था. Issues relating to off-balance sheet borrowing and their impact on fiscal health were discussed through the conference. Also reviewed cash management and market borrowing by the states. That is true. So इसका आंसर भी बनेगा B option. 1, 2, 4, 5 are correct. मजा आया? Done guys? ठीक है. As I asked you to comment in the previous session, and it's all because of your comments, I have included this homework section again. So I want you to take the screenshot one by one, and then you will be sharing the answers in the comment section. देखना जरा, chronological order का ध्यान रखना. First question is now on your screen. You have 10 seconds to take the screenshot. Moving on to the next. This is the second question. Take the screenshot again. Third question. Take the screenshot. Sorry. Fourth question, take the screenshot. Fifth question, take the screenshot. Done. Okay, so don't forget to hit the like button. Don't forget to share the link with your friends. We'll catch you soon, and tomorrow at 7 p.m. we have a revision session. I hope you all remember that. So tomorrow at 7 p.m. we have a revision session. So be with me tomorrow at 7 p.m. and try to join live, which will help you a lot. Don't disappoint me, because I will be working really very hard to frame the PDF for your session. So be with me in large number so that we can do pretty well. Thank you so much. Good luck. God bless you all.